गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया जर्मनी टाइज। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जर्मन चांसलर जो है इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो उसी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ है। तो ये पहली स्टैंडलोन विजिट है जर्मन चांसलर की इंडिया में जब से आईजीसी मैकेनिज्म हमने 2011 में साइन किया है। आईजीसी मैकेनिज्म क्या होता है? एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है जिसमें दोनों कंट्री के मिनिस्टर्स जो हैं वो अंडर प्राइम मिनिस्टर और चांसलर जो है वो आपस में विजिट करते रहते हैं। अब हमने इस विज़िट में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो हमने फ्रेमवर्क साइन किया है, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, जो कि एक्चुअली में 1974 में साइन किया गया था। उसको हमने एक तरह से विजन स्टेटमेंट उसके ऊपर साइन किया है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, एक अम्ब्रेला पार्टनरशिप भी साइन की गई है जिसमें जर्मनी 10 बिलियन यूरोस जो है वो प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए। इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी सितंबर 2022 में जो बनाई गई थी, उसके बारे में भी जो है वो एक्शन प्लान जो है वो फाइनलाइज किया गया है। फिर हम ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, मतलब हम थर्ड कंट्रीज़ में इंडिया और जर्मनी मिलकर प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, जैसे कैमरून, मलावी, घाना, पेरू, इन सब में जो है प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। अब इंडिया और जर्मनी के जो टाइज़ हैं वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप ले चुके हैं सिंस मई 2000 और इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस 2011 से आपस में चल रही हैं। इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस देखें तो इंडिया का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जर्मनी, और इंडिया का यूरोप में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जर्मनी ही है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स $9.8 बिलियन रहे हैं और इंपोर्ट्स लगभग $14.97 बिलियन रहे हैं। जर्मनी 9th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स भी है इंडिया के लिए। अगर हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन देखें तो $1.3 बिलियन के आसपास जो है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल कोऑपरेशन की जो है वो फंडिंग जर्मनी ने कमिट की है। एमओयू ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी जो है वो साइन किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जो है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो जॉइंटली फंडेड 2008 से चल रहा है, और उसके लिए भी एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। सिस्टर स्टेट सिटी अरेंजमेंट्स भी हैं हमारे बीच में, मतलब कर्नाटका और बेवेरिया के बीच में, महाराष्ट्र और बैडन व्युरटेनबर्ग के बीच में, मुंबई स्टटगार्ट के बीच में, कोयम्बटूर और एस्लिंगन के बीच में। ठीक है। अब लगभग 29,000 इंडियन स्टूडेंट्स और 800 जर्मन स्टूडेंट्स इंडिया में और जर्मनी में और इंडिया में रिस्पेक्टिवली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली आईएमएफ और एफएसबी दोनों को बोला है कि एक टेक्निकल पेपर निकालो क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर। तो एफएसबी है क्या? जो आपके ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के को जो है मॉनिटर करने वाली और रिकमेंडेशन देने वाली एक इंटरनेशनल बॉडी है, जिसको 2009 में G20 की लंदन समिट के बाद बनाया गया था। तो ये आपके नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ के बीच में एक ऑपरेशन का काम करती है, और फाइनेंशियल सिस्टम्स जो है ग्लोबली उसको स्ट्रेंथन करने का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। सारी G20 मेजर इकोनॉमीज़ तो इसके मेंबर ऑलरेडी ही हैं। ठीक है। अब इसके प्लेनरी सेशन होता है, एक जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, स्टीयरिंग कमेटी भी होती है, 3 स्टैंडिंग कमेटी होती है, और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं मेंबर्स के ऊपर। इंडिया और एफएसबी का जो है वो इंडिया जो है एक्टिव मेंबर है एफएसबी का, और 3 सीट्स हैं इंडिया के पास इसकी प्लेनरी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैन ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सिएटल की सिटी काउंसिल ने जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बैन लगाया है। यूएस की पहली सिटी बनी है ये जिसने ऐसा किया है। अब इस ऑर्डिनेंस में डिस्क्रिमिनेशन अलॉन्ग साइड रेस, जेंडर और रिलीजन, अब कास्ट भी रख दिया गया है। कास्ट उन्होंने डिफाइन किया कि ऐसी रिजिड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो कि हेरिडिटरी है। ठीक है। अब जो है, क्या ऐसा ज़रूरत थी? इक्वालिटी लैब्स 2016 के डाटा के मुताबिक 1 in 4 दलित्स इन यूएस जो है उनको वर्बल या फिजिकल असॉल्ट बिकॉज ऑफ कास्ट फेस करना पड़ा है। लेकिन क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस का। उन्होंने कहा है कि इससे एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी, और ड्यू डिलिजेंस नहीं देखी रखी गई है जब इस ऑर्डिनेंस को जो है वो बनाया गया है। दूसरा, क्योंकि यूएस के फर्म्स जो हैं वो पहले ही रिस्क अवर्स होती हैं, अब वो ऑलरेडी जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आ जाएगा, तो वो अपने आप को लीगल जो है एक तरह से झमेलों से बचने के लिए वो इंडियन अमेरिकन्स उनके लिए लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे जो है उनको एम्प्लॉय करना, क्योंकि उनको लग सकता है कि कल को हमारे ऊपर ये कास्ट के केस ना कर दें। तो इसलिए ऑफ कोर्स इंडियन अमेरिकन्स जो है वो थोड़े लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे यूएस की कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स।
इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अमेज़न ने अनाउंस किया है कि वो भी ओएनडीसी को जॉइन करेंगे। ओएनडीसी इंडिया का एक जो है इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है जिसमें स्मॉल मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स को हम टेक्नोलॉजिकली और ई कॉमर्स के प्रोसेसेस के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपके जितने सेलर्स हैं, जो आपके स्मॉल मर्चेंट्स या किराना स्टोर्स, इनका एक पूरा हम एक ओपन नेटवर्क बना देंगे जिसका सबको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन सब के पास एक्सेस चला जाएगा। और आप होगा क्या कि आप चाहे अमेज़ॉन पर हो, लेकिन अगर कोई सेलर फ्लिपकार्ट पर जो है वो रजिस्टर्ड है तो भी आप उससे शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ओपन नेटवर्क है। कोई किसी की भी, ना फ्लिपकार्ट की, ना अमेज़ॉन की, ना किसी भी और कंपनी की मोनोपोली नहीं है किसी भी सेलर के ऊपर। ठीक है, अब ओएनडीसी एक प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको डीपीआईआईटी ने बनाया है। 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। कोई एप्लीकेशन या इंटरमीडिएट या सॉफ्टवेयर नहीं है, बस बेसिकली एक ओपन नेटवर्क बन गया है जिसमें सारे सेलर्स जो हैं वो सब आपस में इसमें रजिस्टर हो जाएंगे और सब सब के सब जो है वो जो ओएनडीसी को सब्सक्राइब करेंगी, जैसे अमेज़ॉन ने अब कर लिया है, उन सबको एक्सेस मिल जाएगा उसका। ठीक है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। कुछ सेलर्स जो हैं वो फेवर किए जाते थे अमेज़ॉन द्वारा, कुछ सेलर जो है वो फ्लिपकार्ट द्वारा फेवर किए जाते थे। एंट्री और डिस्कवरी ऑनलाइन जो है उसके ऊपर बैरियर था, नॉन कॉम्पिटिटिव बिहेवियर था, और $810 बिलियन की डोमेस्टिक रिटेल मार्केट है उसको कैप्चर करना ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं द चिप फोर अलायंस। ये आपके इकोनॉमी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चिप फोर अलायंस जो है वो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग की है अमंग सीनियर ऑफिशियल्स। ये चिप फोर अलायंस जो है यूएस ने प्रपोज किया था मार्च 2022 में। ये वो कंट्रीज़ हैं जो 70% जो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, यूएस, जापान, ताइवान और कोरिया। तो इस अलायंस का बनाने का मोटिव ये है कि इंडस्ट्री एफर्ट्स को सपोर्ट करना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिससे कि एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स और इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो कंडक्टिविटी देते हैं कंडक्टर्स के बीच में और इंसुलेटर्स के बीच में। ये प्योर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। और इनका, क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, और ये इसलिए कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ कर किए जाते हैं। इनको मैनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनर मोस्ट इनर कोर। ज्योग्राफी के लिए और जो है आपके साइंस एंड टेक दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं एएनयू के, उन्होंने पाया है कि एक डिस्टिंक्ट फिफ्थ लेयर ऑफ द अर्थ भी है जो कि सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। इसका नाम रखा गया है इनर मोस्ट इनर कोर। 400 मील वाइड है ये, और ये एक मेटल की बॉल है। ये एक अलॉय ऑफ आयरन कार्गल्स आई एम सॉरी अलॉय ऑफ आयरन एंड निकल से बनी है। टेम्परेचर इसका लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस है। 2002 में पहली बार प्रमोज किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सिस्मोलॉजिस्ट द्वारा कि जो हम इनर कोर सोचते हैं उसके भी अंदर एक इनर मोस्ट कोर भी है। ठीक है, अब हम इनर कोर भी देख लेते हैं। इनर कोर जो है एक सॉलिड मेटालिक बॉल है जो कि आयरन की बनी है, और ये सॉलिड है बिकॉज ऑफ प्रेशर जो कि अर्थ का वेट जो है वो डाल रहा है इसके ऊपर। ये डिस्टिंक्ट है आउटर कोर से जो कि लिक्विड है। इसका रेडियस लगभग 1220 किलोमीटर्स है, और इसमें टेम्परेचर्स लगभग 4000 से 4700 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं? वेरी हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसमें, और इसका अपना ओन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये ज़्यादा तेज़ी से घूमता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लानट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं देखो अपना देश इनिशिएटिव। गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आईआरसीटीसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर टूर पैकेज भी निकाल दिया है अंडर देखो अपना देश इनिशिएटिव, और ये वो प्लेसेस और डेस्टिनेशंस जो हैं वहाँ पर लेकर जाएंगे इस टूर में जहाँ जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर से की लाइफ से एसोसिएटेड हैं। न्यू दिल्ली जो है से शुरुआत होगी अप्रैल 2023 में पहली जर्नी की। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो हैं वो इन थीम बेस्ड सर्किट्स पर चलेंगी। देखो अपना देश इनिशिएटिव टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म द्वारा फाइनेंशियल हेल्प देता है टूरिस्ट को, और एक जो है बजट देता है कि वो इंडिया में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इसमें 50 डेस्टिनेशंस जो है वो कंट्री में आइडेंटिफाई की गई हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोल ट्राइब, सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने कोल जनजाति महाकुंभ को जो है वो एड्रेस किया है। कोल ट्राइब जो है वो प्रोटो एस्टेरॉयड एथनिक स्ट्रेटम को बिलोंग करती है। ये अपने आप को डिसेंडेंट्स ऑफ सहारा माता मानते हैं और जो कि उनकी मदर ऑफ कोल है। ये मध्य प्रदेश के नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ये ट्राइब कंसंट्रेटेड है और ये हिंदी का ही यूज़ करती हैं ऑफ कोर्स देवनागरी स्क्रिप्ट में। जवारा फेस्टिवल बहुत ही फेमस है जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है, एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और ये जस्ट बिफोर द सोइंग ऑफ विंटर क्रॉप और जो है ये स्प्रिंग के बाद जो है ये जब हार्वेस्ट किया जाता है तब ये जवारा फेस्टिवल मनाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू में जब जो कोल रिवोल्ट है उसके लिए बहुत फेमस है। इन्होंने जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था 1831 में, ठीक है। तो कुछ उनके लीडर्स हैं, उनके नाम यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उनिंग फेस्टिवल। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो है उन्होंने सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में अटेंड किया है। ये सीजन ऑफ कल्टीवेशन में ये फेस्टिवल मनाया जाता है आदि कम्युनिटी के द्वारा, जो कि उनका न्यू ईयर भी होता है। आदि कम्युनिटी कौन है? सदर्न चाइना से 16th सेंचुरी में ये आए थे। लोअर पार्ट ऑफ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट और रोइंग और दाम्बुक एरियाज जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये मेजर ग्रुप बन चुके हैं। केन और बैम्बू आइटम्स के ये एक्सपर्ट्स हैं बनाने के और ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सोलुंग इनका एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है और आरन जो है वो इनका हंटिंग फेस्टिवल होता है जिसमें मेल मेंबर्स हंटिंग के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेरोव्स्काइट्स। तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने एक रिसेंटली न्यू प्रोसेस बनाया है जिससे कि वो लार्ज पेरोव्स्काइट डिवाइसेस बना सकते हैं, जिससे हमको नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स बनाने में आसानी होगी। पेरोव्स्काइट्स क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जैसा मिनरल कैल्शियम टाइटेनियम का ऑक्साइड का होता है। इसको यूराल माउंटेन्स ऑफ रशिया में सबसे पहली बार जो है 1839 में डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट जो है वो पेरोव्स्काइट क्रिस्टल्स को खुद भी बना सकते हैं यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स। और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होती है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासकर फोटोवोल्टाइक सोलर सेल्स बनाने में, फोटो डिटेक्टर्स बनाने में, लाइट इमिटिंग डिवाइसेस बनाने में सबसे ज़्यादा, लेकिन इसका यूज़ सोलर सेल्स बनाने में ही आजकल किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूट्रिनोस। ये भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कामयो का लिक्विड सिंटिलेटर एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट जो कि जापान में चल रहा है, उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि न्यूट्रिनोज ही जो है न्यूट्रिनोज के एंटी पार्टिकल्स हैं। तो न्यूट्रिनोज क्या हैं? ये न्यूक्लियर रिएक्शन से जो कि सन में, स्टार में या कहीं पर भी हो रहा है उससे प्रोड्यूस होते हैं और ये इंटरैक्ट करते हैं बहुत ही वीक इंटरेक्शन से और ग्रेविटी से। और ये एक जो है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिनोज जो है वो चेंज होते रहते हैं आपस में, ऑसिलेट करते रहते हैं आपस में और ये क्रिएट होते हैं रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, ठीक है, जो कि सुपरनोवा के टाइम पर होता है। सुपरनोवा के टाइम पर बनता है, मतलब सुपरनोवा में जो दो स्टार्स टकराते हैं, ठीक है। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल मतलब एक कोई भी पार्टिकल जो उसका ऑपोजिट पार्टिकल होगा। जैसे जो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है तो जो उसका नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल होगा उसको हम एंटी पार्टिकल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है जो, उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में पार्टिसिपेट कर रही है जो कि यूएई होस्ट कर रहा है। एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के अलावा यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, साउथ कोरिया और यूएसए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे हम यूएई के साथ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं और हम बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस सिंधु केसरी। सिक्योरिटी के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आईएनएस सिंधु केसरी जो है पहली इंडियन सबमरीन बनी है जिसने कि इंडोनेशिया में डॉक किया है। 3,000 टन की किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 877 है जो कि रशिया के साथ मिलकर इंडिया ने बनाया है। डिस्प्लेसमेंट इसकी 3,000 टन है। इसकी मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ 300 मीटर है। इसको हम किलो का क्लास सबमरीन्स क्या होती हैं? जो नेटो है वो नेवल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो है रशिया की, उनको किलो क्लास सबमरीन बोलती है। ओरिजिनल वर्जन इसका प्रोजेक्ट 877 जो है वो उससे बनाया गया था और जो फर्स्ट किलो क्लास सबमरीन है वो सोवियत नेवी में 1980 में आई थी। इसमें लगभग हम 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स और 18
टॉर्पीडोज और 14 अंडर वाटर माइंस हम इसमें जो है वो कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्विच ब्लेड 600। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस गवर्नमेंट ने यूक्रेन को जो है स्विच ब्लेड 600 जो है वो कामिकाज ड्रोन्स जो है वो प्रोवाइड करने का फैसला लिया है। स्विच ब्लेड 600 कामिकाज ड्रोन्स जो है वो मैन पोर्टेबल ट्यूब है, ट्यूब लॉन्च्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है। अपग्रेडेड वर्जन है ये स्विच ब्लेड 300 का। इससे हम टैंक्स को और हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये 40 किलोमीटर के रेंज पर जो है वो फ्लाई कर सकते हैं, 40 मिनट तक भी फ्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी और प्रोपेलर से चलते हैं। इसमें हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स लगे हैं, एडवांस्ड प्रिसिशन फ्लाइट कंट्रोल भी है इसके पास। ठीक है, अब हम देखते हैं कैमिकाजे ड्रोन्स होते क्या हैं। क्रूलेस एरियल व्हीकल्स हैं जो कि एक्सप्लोजिव्स कैरी कर सकते हैं। एक लॉइटरिंग एमिशन वो म्यूनिशन होता है जिसमें कि हम लंबे टाइम तक किसी भी एरिया को सर्कल करने की कैपेबिलिटी होती है। स्मॉल पोर्टेबल और क्विकली लॉन्च किया जा सकता है इनको। ये क्रैश हो जाते हैं डायरेक्टली टारगेट पर जाके और एक्सप्लोड हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इनको डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है और ये बहुत दूर से फायर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 42nd रैंक आया है अमंग 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज अभी रिसेंटली इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो लॉन्च किया गया उसके अंदर। अब इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है क्या? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर साल इसको लॉन्च करता है। पेटेंट और कॉपीराइट रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं कंट्रीज़ की उसके बेसिस पर रैंक दिया जाता है। इंडिया का इस बार 42nd रैंक आया है और यूएस का ऑफकोर्स फर्स्ट रैंक आया है क्योंकि उन्होंने खुद ही इसको निकाला है। और इसमें बेसिकली इंडेक्स जो है वो दिखाना चाहता है कि कैसे जो है ग्लोबली ग्रेटर इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट किया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? मतलब आपने जो माइंड से जो भी कोई चीज़ बनाई है, जैसे कि कोई भी इन्वेंशन की है, लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क की, उसको हम आईपी कहते हैं। ठीक है, ये लीगल राइट्स देते हैं इन्वेंटर और क्रिएटर को, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा, ये सब आपके आईपी ही के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैड काउ डिसीज़। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील ने अपने चाइना में जो बीफ एक्सपोर्ट्स होते हैं उसको रोक दिया है क्योंकि एक केस ऑफ मैड काउ डिसीज़ आ गया है। और मैड काउ डिसीज़ क्या होती है? इसको हम BSEB कहते हैं। एक ट्रांसमिसिबल स्लोली प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव और फेटल डिसीज़ होती है जो काउ के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करती है। इसमें एक प्रोटीन होता है वो जो प्रेऑन नाम का, उसी की वजह से ये डिसीज़ होती है। और ये नर्वस सिस्टम के टिश्यू को जो है वो एडल्ट काव के डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। होती कैसे ट्रांसमिट ये? जब कोई काव कंटेमिनेटेड फीड खा लेती है तो उससे जो है वो उसको ये डिसीज़ हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? उनको चलने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है। 4 से 6 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम्स एमर्ज होने में। और करंटली इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Germany ties. This topic is important for your international relations. So you know that recently German Chancellor has visited India on a 2-day state visit, and this is the first standalone visit of a German Chancellor to India since the signing of biennial intergovernmental consultation mechanism since in 2011. What is IGC? IGC is a whole of government approach in which the ministers from both countries start discussing in their respective areas of responsibility under the auspices of Prime Minister and Chancellor. So we have also signed a vision statement regarding the cooperation in scientific research and technological development agreement, which we signed in 1974. We have also signed a green and sustainable development partnership, which is an umbrella partnership to steer our ties in climate action and SDGs. Germany will be providing 10 billion euros in this particular GSDP program. Indo-German Green Hydrogen Task Force has also been constituted and an action plan has been finalized recently. We have also decided to extend our triangular development cooperation, and 4 projects have been announced under this in Cameroon, Malawi, Ghana and Peru. Okay, so if we look at our ties, then India and Germany have strategic partnership since May 2000, and it has been further strengthened since the launch of intergovernmental consultations in 2011.
India is the largest trading. I'm sorry, Germany is the largest trading partner of India in Europe, and Germany was 11th largest trading partner of India in the recent year. Bilateral trade between the two countries is almost $25 billion, where the Indian exports are less than Indian imports from Germany. Germany is the ninth largest FDI source for India, and a total volume of about $1.3 billion have been committed by Germany in terms of financial and technological cooperation. We have also signed an MOU on security cooperation, uh, an intergovernmental agreement on scientific research and technological development has also been signed. Sister states agreement or cities arrangements have already been or are already been running since 2016 between Karnataka and Bavaria, Maharashtra and Baden-Württemberg, Mumbai and Stuttgart, Coimbatore and Esslingen. If we look at education, then about 29,000 Indian students are studying in Germany, and about 800 German students are studying in India. So the next topic is financial stability board. This topic is important for your international relations. So India has recently asked IMF and FSB to jointly prepare a technical paper on crypto assets. So FSB is the international body which monitors and makes recommendations about the global financial system. It was established in 2009 after the G20 summit in London, and the aim is to coordinate at the international level the work of national financial authorities and international standard setting bodies. Uh, and to promote implementation of effective regulatory, supervisory and other financial sector policies. It is headquartered in Basel, that is in Switzerland, and the board also includes all G20 major economies. It consists of 68 member institutions, which comprises of several central banks, Ministry of Finance, supervisory and regulatory authorities, etc. Apart from that, 10 international organizations are also represented here. So, of course, plenary is the sole decision making body of this FSB. There is also steering committee, three standing committees, and the decisions of FSB are not legally binding on its members. India is an active member of FSB, and we have about three seats in its plenary, represented by Secretary of Department of Economic Affairs, Deputy Governor of RBI, and Chairman of SEBI. So the next topic is ban on caste-based discrimination. This topic is important for your social issues. So recently, Seattle City Council has become the first city in the US to ban caste-based discrimination. So what is this ordinance? So it is, apart from, of course, banning the discrimination again with respect to race, region, and gender. Caste has also been added in this list. Caste has been defined as any rigid social stratification which is characterized by hereditary status. And how big is the problem of caste in US? As per Equality Labs report, 1 in 4 Dalits in the US had to face verbal or physical assault. But there has been criticism of this ordinance also. So it is being said that it will lead to further anti-Hindu discrimination, and it will dissuade US companies from employing Indian Americans, because they would be fearing that there would be future lawsuits because caste has also been added as a form of discrimination. So the next topic is open network for digital commerce. This topic is important for our economy section. So Amazon has recently announced that they will be joining the Indian government's ONDC project. The ONDC the project of ONDC is to democratize e-commerce market and break the monopoly of Amazon and Flipkart. Okay, ONDC is a government backed project in which small merchants and kirana stores will be digitized, and they would be registered as sellers in an open network, which could be accessed by any of these uh, online marketing companies called Amazon, Flipkart, or any other. Okay, so it will enable MSMEs in India to build and scale their business. ONDC is a private not-for-profit company incorporated in 2021 by DPIIT. It is not any application or intermediary, but it will be basically a repository of all these small and big
sellers, which would be accessed by these companies who are part of ONDC. Okay, so it will be an open network, so you would be able to shop on Amazon from from any seller which has been registered from on Flipkart, or let's say Paytm, because will be common list of sellers among all these companies now. So the aim is to keep check on big tech companies who have been violating consumer protection rules, and they have been giving preference to their own sellers so as to maximize their profits. So, what led to the creation of ONDC? Of course, there was a demand for level playing field, mainly from small retailers, because they were not getting attention on Amazon or Flipkart. Uh, there is a barrier on entry and discovery online, because Amazon and Flipkart were giving preference to their own sellers only. There was this non-competitive behavior of big e-commerce companies had to be countered, and to fully explore the $810 billion domestic retail market, it became necessary. So the next topic is the Chip 4 Alliance. This topic is important for our economy and international relations both. The Chip 4 Semiconductor Alliance has recently held its first meeting of senior officials. It is an alliance between US, Japan, Taiwan, and South Korea, which represent more than 70% of the global semiconductor industry. It was first proposed by US in March 2022, and the intention is to create an the intention is to cooperate on policy implementation level, and to support industry efforts, protect the IP, and develop policies which will allow export of most advanced semiconductors and equipment globally. Okay, what is a semiconductor? So these are materials which provide conductivity between conductors and insulators. They can be pure elements, and they can also be compounds. They are being used as they are used in electrical circuits because they have the ability to control the flow of electrons in this material. Okay, so the next topic is inner core. This topic is important for your geography and science and tech section both. So seismologists of the ANU have recently documented the evidence of a distinct fifth layer of Earth, which is being called as the inner core. Currently, we have, as at present, we only assume that there is only inner core, but now they have also found this innermost inner core. It is almost 644 kilometer wide ball of metal made of alloys of iron and nickel. The temperature here is estimated to be about 5500 to 6000 degrees. It was first proposed by seismologists from Harvard University in 2002. Then what is inner core of the earth? It is a solid metallic ball which is mainly made of iron, and it is solid due to the pressure caused by the weight put on it by the earth's other top layers. It is distinct from outer core, which is of course liquid, and it has an average radius of about 1220 kilometers. The temperatures vary between 4000 to 4700 degrees Celsius in the inner core of the earth. Of course, properties, if we look at properties, it has very high thermal and electrical conductivity. It generates its own magnetic field, and it spins a bit faster than the rest of the planet. So the next topic is Dekho Apna Desh initiative. This topic is important for your governance and social issues. So IRCTC it will be operating Baba Sahib Ambedkar tour package under the Dekho Apna Desh initiative, and this will highlight the places and destinations which are associated with Ambedkar's life. The trains would start from New Delhi in April 2023, and Bharat Gaurav tourist trains on various theme-based circuits through India will be utilized for this project. So what is Dekho Apna Desh initiative? Its aim is to promote tourism. It offers financial help tourists who are traveling to different parts of the country. Government has also set aside a substantial budget for the implementation of this scheme, and the aim is to increase domestic tourism in India. And under this plan, almost 50 destinations in the country have been developed and promoted to attract tourists. So the next topic is Kohl tribe. This topic is important for your social issues. Union Home Minister has recently addressed the Kohl Janjati Mahakumbh. So Kohl tribes belong to Proto-Asteroid Australoid ethnic stratum. They consider themselves to be descendants of Sahara Mata, who is also known as the mother of coal. So
This population of Kol tribe is concentrated in the northern districts of Madhya Pradesh. They speak Hindi and they use Devanagari script. They celebrate the Javara festival, and this festival is an ancient coal agricultural festival which is held twice a year. So, coal revolt or coal uprising is also very famous, which was done by tribal people from Chota Nagpur area when they revolted against the British in 1831. The leaders of this revolt are mentioned. The names of the leaders of this revolt are mentioned here. So the next topic is Uning Festival. This topic is important for your social issues. So recently, Union Minister of Ports has attended the colorful Siang Uning Festival in Arunachal Pradesh. It is the season of cultivation. It marks the beginning of season of cultivation of the Adi community, and it is also the new year for them. So the community is believed to have come from southern China in 16th century, and they have now they now inhabit the lower part of Dimang Valley district, especially the Roing and Dambuk areas of Arunachal Pradesh, and they are experts in making cane and bamboo items. They are dependent mainly on agriculture. They have this two famous festivals. First is of course Solu, which is the harvesting festival, and there is Aran, which is the hunting festivals in which male members of the family go hunting. So the next topic is perovskites. This topic is important for your science and tech section. Scientists have recently created a new process to fabricate large perovskite devices which would be used to create next generation of solar cells. So perovskites are a material which has the same crystal structure as the mineral calcium titanium oxide. It was discovered for the first time in Ural mountains of Russia, and scientists can design these perovskite crystals to have a wide variety of several electrical characteristics. Okay, so applications of course include various field in the various field. They have applications in various fields of optoelectronics, including the manufacturing of photovoltaic solar cells, photodetectors, light emitting devices, but mostly it is being used for creation of solar cells. So the next topic is neutrinos. This topic is important for your science and tech section. Recently, the Kamioka liquid scintillator anti-neutrino detector experiment in Japan has said that they have found no evidence that neutrinos are their own antiparticles. So neutrinos, you know that they are produced in nuclear reactions which are being done in sun, stars, and elsewhere. They oscillate, which means that different type of neutrinos change into one another. A neutrino is a fermion also, which means that it interacts only through weak interaction and gravity. Neutrinos are created by various radioactive decay also. But what is an antiparticle? Antiparticle means that the opposite particle. For every positively charged particle, there would be a negatively charged particle. For example, antiparticle of an electron is the positron. So the next topic is exercise desert flag 8. This topic is important for your security section. Indian Air Force is participating in exercise desert flag, which is being hosted by UAE. It is an annual multinational large force employment warfare exercise which is hosted by UAE Air Force. Apart from India, UAE, France, Kuwait, Australia, UK, Bahrain, Morocco, Spain, South Korea, and USA are also participating. With UAE, India already has a bilateral naval and air force exercise. So the next topic is INS Sindhu Kesari. This topic is important for your security section. So INS Sindhu Kesari has become the first Indian submarine to dock in Indonesia. It is a 3,000 ton kilo class diesel electric submarine, which was designed as part of Project 877 by Russia and in Ministry of Defense India, and it has a displacement of about 3,000 tons. It has a maximum diving depth of 300 meters. What are kilo class submarines? So this is the NATO designation for diesel electric submarines made in Russia. Their original version was created in Russia under Project 877. They are the first kilo class submarines entered into the Soviet Navy in 1980. They can carry up to 8 surface to air missiles, 18 torpedoes, or 14 underwater mines.
So the next topic is Switchblade 600. This topic is again important for your security section. US government has announced a new package of long-term security assistance to Ukraine, under which Switchblade 600 kamikaze drones would also be given. So these drones are man-portable tube-launched loitering munition. They are an upgraded version of Switchblade 300, and they have been fitted with ATGM, that is anti-tank guided missiles. So they can fly, track, and engage their targets over a range of 40 kilometers, and they have more than 40 minutes of flight endurance. They are powered by electric battery and propellers. It is also equipped with high resolution sensors and advanced precision flight control systems, which is used for, of course, navigation, surveillance, and targeting. What are kamikaze drones? So these are crewless aerial vehicles which are loaded with explosives. They are also known as loitering ammunition because they are capable of circling for some time in an area. They're small, portable, and they can be quickly launched. They can crash into a target and explode. The biggest advantage is that they are hard to detect and they can be fired from a distance. So the next topic is International IP Index 2023. This topic is important for our economy section. India has been ranked 42nd among 55 leading global economies on the recently released International IP Index. So this index is released annually by US Chamber of Commerce, and it evaluates 55 global economies across 50 unique indicators, which include patent and copyright policies also. The aim is to help nations navigate towards a brighter economic future, marked by greater innovation, creativity, and competitiveness. Of course, because it is released by US, the US ranks first in this index. What is intellectual property? It refers to the creations of mind, and it gives legal rights given to the inventor or creator. And there are certain types of intellectual property protection like patent, copyright, trademark, etc. So the next topic is mad cow disease. This topic is important for our environment section. So Brazil has recently halted its beef exports to China because a case of mad cow disease has been confirmed. Mad cow disease is also known as BSC. It is transmissible and it is slowly progressive, degenerative, and a fatal disease which affects the central nervous system of the adult cattle. It is caused by a protein called prion, and it destroys the nervous system tissue. It can get transmitted to a cow if the cow eats contaminated feed. The symptoms include incoordination, which means the sick cow has trouble walking and getting up. It takes generally about 4 to 6 years for the symptoms to show, and currently there is no vaccine available for this disease. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.